Assalamu alaikum wa rahmatullah. In the previous video, I discussed about the first important characteristic property of chemical chains, in which I mentioned that chemical chains are those chains in which new substances with entirely different properties are formed, and that chemical chains are permanent chains and they are irreversible in nature. In the previous videos, some of the parents they suggested me that I should use Urdu as well so that students can learn better and in a more convenient and comfortable manner. Therefore, I have decided to use Urdu as well so that you can understand and learn it better. In today's video, I'd like to throw light on another important characteristic property of chemical chains, that's energy involvement and chemical chains. As far as energy is concerned, as we all know, in simple words, energy is the ability to do work or to cause a change. As far as chemical changes are concerned, in chemical changes, rearrangement of atoms or elements between the reacting species or between the existing reactant species or between the reactants take place, or I should say, in chemical chains, atoms or elements, they do not change into another atom or element, but only a rearrangement occurs. जहां तक रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का ताल्लुक है, रिएक्टिंग स्पीशीज जो है जिन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, उनके बीच में एक रीअरेंजमेंट होता है, रीअलाइनमेंट होता है, रिस्ट्रक्चरिंग होता है, और उस रीअरेंजमेंट की बिना पे हमारे सामने एक नया प्रोडक्ट जो है वो देखने को मिलता है. बट दिस रीअरेंजमेंट इज ओनली पॉसिबल if the old bonds between the existing reactant species और between the existing reactants जो आपस में रिएक्ट करते हैं उनके बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं. नाउ अब सवाल ये है कि बॉन्ड्स क्या है. Bond is a connection between the two atoms in a molecule, or bond is a connection or a glue between two elements in a compound. Atoms और elements के बीच में ये ग्लू का काम करता है. इसकी मदद से एलिमेंट्स और एटम्स जो है वो स्टिक कर जाते हैं एंड इट्स ए काइंड ऑफ कनेक्शन. सो जहां तक रीअरेंजमेंट का ताल्लुक है, इट विल ओनली हैपन इफ ओल्ड बॉन्ड्स बिटवीन द एग्जिस्टिंग reacting species और बिटवीन द एग्जिस्टिंग रिएक्टेंट्स आर ब्रोकन. जब वो ब्रेक हो जाएंगे तो एक नया रीअरेंजमेंट होगा, और नया रीअरेंजमेंट जब वजूद में आएगा उसे ही हम उस नए रीअरेंजमेंट को हम प्रोडक्ट की फॉर्म में देखते हैं. सो यहाँ पे पुराने बॉन्ड्स का ब्रेक होना और नए बॉन्ड्स का फॉर्म बनना और नए बॉन्ड्स का बनना वो ज़रूरी है. अनलेस दैट हैपन दिस रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल. अब जब हम कहते हैं कि यहाँ पे एक बदलाव की ज़रूरत है, एक रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स की ज़रूरत है, तो यहाँ पे एनर्जी का रोल बनता है. एज आई मेंशन्ड अर्लियर दैट एनर्जी इज द एबिलिटी टू काज ए चेंज. ओके, जहाँ पे बदलाव की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा, वहाँ पे एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट तो लाजमी बनता है. सो therefore, I should conclude this statement like this: energy is always involved in a chemical change. Now, there are two cases. Either energy is required or absorbed, or energy is evolved or released. जहाँ तक reactants जो है, जो substances आपस में react करते हैं, उन्हें हम reactants कहते हैं, और वो रीअरेंज हो जाते हैं और एक नए फॉर्म में हमारे सामने आ जाते हैं प्रोडक्ट्स की सूरत में. तो जहाँ तक रिएक्टेंट्स की बात है, ओल्ड बॉन्ड्स शुड ब्रेक. ओल्ड बॉन्ड्स जो है
बिटवीन रिएक्टेंट्स वो टूटने चाहिए, और उन ओल्ड बॉन्ड्स को टूटने के लिए एनर्जी यहाँ पे ज़रूरत है, एनर्जी यहाँ पे चाहिए. सो एनर्जी इज रिक्वायर्ड और एब्जॉर्ब्ड टू ब्रेक एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स बिटवीन रिएक्टेंट्स. यानी कि रिएक्टेंट्स के बीच में जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स ऑलरेडी है उनका ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है. जब भी वो ब्रेक हो जाएंगे वो रीअरेंज करेंगे और एक नया रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट की फॉर्म में हमें देखने को मिलेगा. बट दैट्स ओनली पॉसिबल इफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड. सो एनर्जी इज टेकन फ्रॉम द सराउंडिंग्स और एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड. Okay, so energy is absorbed, energy is required to break the old bonds between the existing reactants. When the bonds are broken, there is a complete realignment or restructuring or rearrangement, and when products are formed, the same amount of energy that was absorbed will be evolved during the formation of products. Because we very well know the law of conservation of energy, that energy can neither be created nor destroyed, but can be transferred from one form to another form. The overall value of energy should remain constant. So I was talking about the role of energy in rearranging or in rearrangement. When we say that chemical changes, rearrangement of atoms or elements take place. So on the basis of this energy involvement, on the basis of either energy is absorbed or evolved, there are two types of reactions. Those reactions in which energy is absorbed or in which energy is taken up from the surroundings, those reactions in which energy is absorbed or energy is taken up or energy is utilized or energy is used or required, those reactions are known as endothermic reactions. As the name suggests, endo means absorption, thermic is related to energy or temperature or energy in the form of heat. So endothermic reactions are those reactions in which energy is absorbed from the surroundings, for example photosynthesis. And the second case is those reactions in which energy is liberated, okay, in which energy is produced, in which energy is generated, or in which energy is evolved. Because exo means evolution, thermic is related to the energy in the form of heat. So all those reactions in which energy is released to the surroundings, okay, are exothermic reactions, and rusting and combustion are two examples of exothermic reactions. So all these things taken together, they make us able to learn that there is always energy involvement as far as chemical changes or chemical reactions are concerned. Without the involvement of energy, chemical changes or this restructuring, this rearrangement, this realignment, and that realignment in the form of products cannot be observed, cannot be realized. So energy involvement is necessary option for chemical reactions to take place. In the coming videos, I'd like to go on another important characteristic properties of chemical changes. Till then, you take good care of yourself. Stay safe, stay blessed. Allah Hafiz. God bless you.